quadratic equations. देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच x हैज डिग्री 2, जिस इक्वेशन में x की डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। जिसमें a must not be equals to 0, a not is not equals to 0, b c may or may not be equals to 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल क्या है? 3x² - 7x - 12 equals to 0, 9x² - 49 equals to 0, x² - 36 equals to 0. ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation. ऐसी कुछ वैल्यूज है x की जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। Is called roots of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के मेथड से पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। दूसरा फार्मूला मेथड है, रूट एक फार्मूला मेथड है। और तीसरी मेथड है, उसके जो रूट्स है उसको सिंप्लीफाई करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन मेथड। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड ये बहुत ही सिंपल मेथड है। यू आर ओरली फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मेथड जो है उसे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इफ x² plus bx plus c equals to 0 is a quadratic equation, then x equal to minus b plus or minus under root b² minus 4ac upon 2a. This is a formula method जिसमें x क्या होता है, कोई a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें ये है कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स। c is a constant term. This is known as formula method to find out the roots of a quadratic equation. इसमें से फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। relation between the roots and coefficients
relation between roots and coefficients. For a quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. Number one, sum of roots, that is minus b by a, and product of roots, that is c by a. This is about the roots of a quadratic equation and coefficient, relation between roots and coefficient. If we know the roots of a quadratic equation, then how we find out the quadratic equation? अगला point है students, method of finding quadratic equation. Method of finding quadratic equation. Method of finding quadratic equation. When roots of quadratic equation are known, when roots of quadratic equation are known, the equation is given by x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0. देखो स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर आपको रूट्स मालूम है, therefore equation can be formed, and equation can be determined by the formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0.
This is ये सिनॉप्सिस है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इतने इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? Now we discuss the MCQs. Number 1. If the sum of the roots of a quadratic equation if the sum of the roots of the quadratic equation is 6 and product of roots is also 6, then equation is देखो स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 6 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अभी हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो 6, therefore the equation is x square minus sum of the roots into x plus product of roots is equals to 0. Therefore x square minus 6x plus 6 equals to 0. ये quadratic equation फॉर्म होता है स्टूडेंट्स।
Next, the value of the expression (16x square minus 24x) 16x square plus 24x plus 9 for x equals to minus 3/4 is, x की वैल्यू 3/4 है, तो 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? देखिए 16 इंटू माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 3/4 प्लस 9. सर उधर 16y स्क्वायर दिया है ना, तो उधर 3/4 थोड़ी आएगा। x है बेटा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9, तो x की वैल्यू माइनस 3/4. ठीक है, तो एक्सप्रेशन आएगा 16 इंटू माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 3/4 प्लस 9. देखो दैट इज 16 इंटू 9/16 प्लस इंटू माइनस माइनस 24 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 9. नेक्स्ट स्टेप 16 कैंसल, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, that is equals to 9. Very nice. Minus 18 plus 9 is equal to 0. Next, if one root of x square minus 4x plus k equals to 0, is 6, then the value of k is इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक रूट 6 है, तो k की वैल्यू क्या है? Roots of quadratic equation is nothing but the value of x. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट 6 है, इसका मतलब x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करती है, x की वैल्यू 6 होगी, x की एक वैल्यू 6 होती है, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस k इक्वल्स टू 0. 16
36, 6 का स्क्वायर 36 minus 24 plus k equals to 0. Therefore, k equals to a minus 12. k की वैल्यू -12 होगी स्टूडेंट्स. Next, which one of the following is not a factor of? Which one of the following is not a factor of? X cube minus 6x square plus 11x minus 6. A x minus 3. B x minus 6. C x minus 4. D x minus 1. तो चेक करते हैं हर एक वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स. देखिए पहले x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं. x माइनस 3 दैट इज x इक्वल टू 3. 3 का क्यूब minus 6 into 3 का स्क्वायर plus 11 into 3 minus 6. 9 minus 54 plus 33 minus 6. 3 का क्यूब 27 है स्टूडेंट्स. 3 का x की वैल्यू 3 पुट करते हैं इसमें. 27 plus 33 that is 60 minus 54 minus 6 minus 60 equals to 0. अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये रूट है. x इक्वल टू 3 ये रूट है. x माइनस 3 रूट है तो x इक्वल टू 3 चेक करना पड़ता है इस इक्वेशन में. अभी x माइनस 6 के लिए पुट करते हैं. x minus 6 which implies x equals to 6. Therefore 6 का क्यूब minus 6 into 6 का स्क्वायर plus 11 into 6 minus 6. 6 का क्यूब that is 216.
माइनस ये भी 216 ही होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 6 36 का क्यूब प्लस 11 6 are 66 minus 6. So it does not satisfy the equation. यहाँ पे भी it does not satisfy the equation. Therefore, x minus 6 is not a root of equation. Then we check for x equal x minus 4. It implies x equal to 4. Therefore, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 टू 4 माइनस 6. 4 का क्यूब है 64 and 16 into 6 96 plus 44 minus 6. If 64 plus 44 108 minus 96 minus 6 102, that is equals to 6. It is not equal to 0. Therefore, x minus 4 is not a root of equation. हम चेक कर रहे हैं कि ये जो गिवन वैल्यूज है whether it is a root of equation or not. x equal to 3 रूट है, x minus 6 रूट नहीं है, x minus 4 भी रूट नहीं है. अभी x minus 1 के लिए चेक करते हैं. अगर वैल्यू 0 आती तो वो रूट्स होता है. Therefore, x minus 1 के लिए चेक करते हैं. It implies x equal to 1. Therefore, ये जो इक्वेशन है 1x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 1 cube minus 6 into 1 का square plus 11 into 1 minus 6, that is 12 minus 12 equals to 0. Therefore, x minus 1 is root of equation.
सर इसका आंसर कहाँ होगा फिर? इसका आंसर 2 होंगे बेटा। आंसर है x-4 and x-6 are not roots of the equation. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नाही एकटा केलं का त्यानं तुम्ही कुठं बघितलं